तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर होची कौन चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल कौन है से जिनसटा देखिए. क्वाड्रिलेटरल होची एमती गोटे पॉलीगन ए पॉलीगन व्हिच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स राइट. A polygon which is made up of 4 sides is called a quadrilateral. So बहुत special quadrilaterals और various quadrilaterals विषय रे क्लास 8 रे सब जिनसे पढ़ाई राइट. ता भीतर बहुत गुडे स्पेशल आ हमर नियर एंड डियर के parallelogram. So what is called a parallelogram? फर्स्ट तांक कथा देखिया. So parallelogram एमती होची गोटे quadrilateral जोडी के let us construct a parallelogram. So if this is a parallelogram, so here we can say that in this parallelogram the opposite angles are equal and the opposite sides are also equal and parallel right. So a particular quadrilateral in which the opposite both the pairs of opposite sides are equal and parallel. Both the pairs of opposite sides are equal and parallel right. And also we know that I mean that opposite angles could be equal. So it is so various properties I mean class 8 रे आम जब पढ़ी कि parallelogram रो जो डायगोनल्स अच्छी से डायगोनल्स ईच अदर को बाइसेक्ट करती. एटा को ये बाइसेक्ट करे एटा को ये बाइसेक्ट करे राइट. आ गोटे कथा होची कि गोटे parallelogram रो ओवरलुक खाली कर दो तापर आउ थरे डिटेल गोटे गोटे करी प्रूफ करिया. parallelogram रो डायगोनलटा parallelogram को दीटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रे भी प्रूफ करे. एमती वेरियस प्रॉपर्टीज न्यूमरस प्रॉपर्टीज वेयर देयर बहुत गुडे प्रॉपर्टीज विषय में पढ़ी थिले. एबे देखिबा से प्रॉपर्टीज गुडार प्रूफ. तो फर्स्ट थ्योरम आसी कोन फर्स्ट थ्योरम कहूची कि डायगोनल ऑफ ए parallelogram डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आको केमती प्रूव करिया चलो प्रूव करिया सिखिया. तो थ्योरम 8.1 कहूँ कि गोटे डायगोनल गोटे parallelogram रो गोटे डायगोनल लेट अस कंस्ट्रक्ट ए parallelogram हियर. एटा गोटे parallelogram तार गोटे डायगोनल कोई भी गोटे डायगोनल तमे कंस्ट्रक्ट कर ले थी. लेट्स से एटा तार डायगोनल सॉरी सो अज्यूम करो ए बी सी डी इज ए parallelogram and right and BD is the what BD is the diagonal. तो हमको ये given कौन अच्छे given अच्छे ABCD is a parallelogram and ABCD is a parallelogram and BD is the diagonal. To prove what we need to prove here, we need to prove that triangle ABD is congruent to triangle ABD is congruent to CDB right. Given अच्छी कि ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram को short रे इनसे लिखते abbreviated form and then बाकी proof. तो proof रे देखिए भैया प्रूफ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो और वी आर गिवन हमको जना अच्छी जे एबीसीडी होचे गोटे parallelogram. इफ एबीसीडी इज ए parallelogram तो AD is parallel to BC. we know the opposite pairs of a parallelogram opposite pairs of sides are equal and parallel. तो AD parallel BC we are given AD parallel BC. so sorry एटा ग्रीन रे लिखिया थला. We are given AD parallel BC and BD being the transversal. So angle ABC is equal to angle ABD. Sorry, angle ABD angle. A angle से तो equal. CDB alternate interior angles ना. तबरे
ए एंगल से तो इक्वल हवा ऑब्वियसली इक्वल हवा कहीं ना सेम जिनस alternate interior angles. We are given AD parallel BC and AB parallel CD. तो angle ABD is equal to CBD. So angle ABD is equal to CDB and angle ADB is equal to angle CBD. ये भी सेम जिनस अल्टरनेट इंटीरियर और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. सो एटा हो गले आउ कौन अच्छे हम पाखे गिवन. तो चलो ट्रायंगल चैप्टर रो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स रो रूल और क्राइटेरियन अप्लाई करिया कौन इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी. तो कौन सब अच्छे गिवन देखीदे. फर्स्ट होची एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी राइट अल्टरनेट इंटीरियर. देन साइड बी डी इज इक्वल टू डी बी विच इज ए कॉमन साइड येस और नो राइट. इटा है कॉमन बी डी इज इक्वल टू डी बी एंड देन ए डी बी इज इक्वल टू सी बी डी. तो कौन प्रूव है. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle CDB on the basis of based on the rule of angle side angle, right? Angle side angle criterion or angle side angle rule, right? Prove gala. So here the diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles, right? Clear is that. 8.2 कौन कहूँ 8.2 कहूँ कि इन पारालेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये ऑलरेडी आमर प्रूव हो गला कि गोटे पारालेलोग्राम रे को भी गोटे गिवन पारालेलोग्राम अच्छी से पारालेलोग्राम रे कौन होची कि गोटे डायगोनल से पारालेलोग्राम को दीटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रे डिवाइड कर दोची. तो ऑब्वियसली एज्यूम करो दिस इज ए बी सी डी parallelogram given लिख दबो टू प्रूफ लिख दबो कंस्ट्रक्शन जदी कंस्ट्रक्ट एसी डायगोनल लिख पेरो टू प्रूफ पर प्रूफ रे लिखियो या. we know that triangle ABC is congruent to triangle ADC. ABC is congruent to ADC. No. This is CDA. ABC. This is triangle CDA because AB is equal to CD and BC is equal to DA and AC is equal to CA. Good to go. We are so if these two triangles are similar, then so AB is equal to CD and BC is equal to DA. CPCT corresponding parts of congruent triangles. So prove है hence proved or finally it's proved that AB is equal to CD and BC is equal to DA. So it is proved that the opposite sides of a parallelogram are equal. Clear is that.
then 8.3 given अछि 8.3 कहूची if each pair of opposite sides of a quadrilateral एटी देखा देइछि जे quadrilateral रो जदी each pair of opposite sides are equal त माने एटी AD is equal to BC देइछि and AB is equal to CD देइछि तो एटी हम कोन करे पड़िबो ना क्लियरली हम देखु जे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA ये जो ABC ट्रायंगल टा CDA ट्रायंगल से तो कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हमें जानछे वी डोंट नीड टू प्रूव इट बिकॉज़ हमें दीटा एठी देइजे जे एटा से तो इक्वल बिकॉज़ CD is equal to AB right CD is equal to AB and AD is equal to BC right so एटा हेले ट्रायंगल एंड AC CA कॉमन साइड तो साइड एटा साइड कॉन्ग्रुएंस रे एटा प्रूव हो गेला जे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देटा सो जदी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गेला देन एंगल BAC इज इक्वल टू DCA ए एंगल BAC DCA से तो इक्वल हबो एटा कोन पे व्हाइट को हमें एबे कट करी के एटी लिखि देबा कोन CPCT corresponding parts of congruent triangles now if two non-intersecting line AB and CD are there and AC being the transversal AC जदि transversal है आउ it जो pair of alternate angles interior alternate angles रो pair जदि equal ताले obviously ये दीटा side parallel ये दीटा side भी parallel ये दीटा side भी parallel तो parallel तो रहिले equal तो already given अछि parallel हेले so it is or it can be said that ABCD is a parallelogram because in any quadrilateral if the opposite pairs of sides are equal and parallel then that is called a parallelogram this is the basic requirement for a quadrilateral to be a parallelogram to be named to be called as a parallelogram gote parallelogram kuhaba कहले गोटे को भी quadrilateral रो opposite pair of sides एटा सहित इक्वल एटा सहित इक्वल हेता दरकार पैरेलल हेता दरकार ऑलरेडी टी गिवन अछि जे एटा इक्वल सब माने आ समान समस्त माने इक्वल आ पैरेलल तो हमें प्रूव कर देले बिकॉज़ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एटा सहित इक्वल एटा सहित इक्वल एती प्रूव कर देले एटा सहित पैरेलल एटा सहित पैरेलल ऑब्वियसली गेला ठीक नाउ द फैक्ट इज नेक्स्ट थ्योरम 8.4 को देखो 8.4 थ्योरम टा बहुत इजीली हमें कर दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर को पीछे पिला कंफ्यूज हो जानती एथरे बहुत सिंपल टा बोली कंफ्यूज हो जानती गोटे पैरेललोग्राम हमहु गिवन अछि ठीक गोटे पैरेललोग्राम एटी दीटा अलगा अलगा मो पैरेललोग्राम करबी सेथरे बुझे देब एटी दीटा पैरेललोग्राम हैला तो फर्स्ट कथा होची मो पैरेललोग्राम रे कोन कली न तेरा डायगोनल टा ड्रा कर दो सॉरी डायगोनल अरे सीधा हो यार आ व्हाटएवर तो एबे कथा होची पैरेललोग्राम रो जो डायगोनल टा मो ड्रा कली ए बी सी डी हैला मते गोटे कथा को एटी पैरेललोग्राम माने एटा गिवन अछि एटा से तो इक्वल और पैरेलल एटा से तो इक्वल एंड पैरेलल तो मु इजीली प्रूव कर परबी ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA करियावा easy peasy already prove करले कहना already theorem 8.1 says the diagonal of a parallelogram bisects it into divides it into two congruent triangles so congruent triangle दीटा रे convert हो गेला तो now can we say or can I write that angle ABC is equal to angle CDA very simple and logical that A angle to equal so these are the opposite angles easily prove हो गेला these are the opposite angles right similarly एटा हो गेला CPCT रे प्रूव हो गेला CPCT opposite angle गोटे pair of opposite angle equal हो गेला so it is similarly if the diagonal is written like this A B C D if the diagonal is drawn from B to D similarly triangle ABD is congruent to triangle CDB CDA ABD
is ABD is congruent to CDB. CDB. Similarly, तो एठी भी गिवन थिबो ए एंगल ए साइड टा ए साइड सहित इक्वल एटा सहित इक्वल एटा कॉमन साइड तो प्रूव हे जो राइट प्रूव हे गला परे नाउ कैन वी राइट कि ए एंगल सहित इक्वल हो दैट एंगल BAD is equal to BAD सेमती DCB ए एंगल टा DCB ए एंगल टा सहित एंगल DCB एटा भी हला CPCT क्लियर तो एटा हला परे कोन करिवा ना एठू क्लियरली प्रूव हे गला कि द अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम देयरफॉर we can conclude the opposite angles in a parallelogram are equal. That's it. Okay, let's prove if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it's a parallelogram. चलो देखिबा आकु प्रूव करिबा जदी गोटे quadrilateral अछि आ से quadrilateral रे each pair of opposite angles are equal then that is a quadrilateral. Sorry, that is a parallelogram. Sorry, let's prove it. तो भाभी नवा this is a quadrilateral, this is the quadrilateral ABCD and okay, and we are given that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D, right? This is given to us. So angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. तो हमको ये प्रूव करियर कौन अच्छी प्रूव करियर अच्छी that to prove angle ABCD is a parallelogram. ठीक तो in quadrilateral ABCD what else do we know about the quadrilateral? According to the angle sum property says, what does it say? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. अच्छा ये given रे लिखी दबो given रे कौन देइछि ये given रे लिखी दबो the angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. So from the above equation, from the above statement, we know angle A is equal to angle C. So can I write 2 times angle A plus 2 times angle B is equal to 360 degree. 2 times angle A plus angle B is equal to 360 degree. Angle A plus angle B is equal to 360 upon 2 is equal 180 degree. So angle A plus angle B are 180 degree. चलो यूक्लिड्स ज्योमेट्री रा फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल पोस्टुलेट्स कथा मन पकेबा पैरेलल पोस्टुलेट कौन कहूँ तो पैरेलल पोस्टुलेट कौन कहूँ कि जदि दुटा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहिले आ गोटे ट्रांसवर्सल तांको इंटरसेक्ट कला गोटे साइड रो इंटीरियर एंगल्स जदि 180 डिग्री हेले ताले से दुटा लाइन हेले पैरेलल ताले ए आ बी दुटा को इंटीरियर एंगल्स जदि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंटरी हेले देन AD is parallel to BC, right? AD टा पैरेलल हेला BC सहित है ना तो हमको एति की प्रूव करार अछि ABCD पैरेललोग्राम केते बेला हबा ना AD पैरेलल BC हवा दरकार आउ AB पैरेलल CD हवा दरकार एति हेला कथा किछि नै तो सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट रो इक्वेशन 1 रो हम देखले सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री तो मु एबे एंगल A जगह C जो नोथली
आउ बी जगह नौली सॉरी डी जगह बी नौली सो मुझे कौन करी बी जगह बी को रखी डी जगह बी लिखू ए जगह सी लिखिदेवी राइट सो यहाँ मुझे एमती लिखिपारि एंगल ए जगह मुझे सी लिखिपारि बिकज ए इज इक्वल टू सी तो एंगल सी प्लस एंगल सी 2 टाइम्स एंगल सी प्लस 2 टाइम्स एंगल बी जगह मु एंगल डी लिखा कथा मु एंगल डी जगह भी बी लिखिपारि सो एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री कहीं डीटा भी बी सहित इक्वल तो 2 टाइम्स एंगल सी प्लस एंगल बी तो 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 upon 2 is equal to 180 degree. Again we found it out that ये जो co-interior angles अच्छा ये भी 180 बस supplement रहे ये angle टा ये angle से तो supplement में 180 जदि होची तो AB भी then AB is also parallel to CD hence proved हमें तो ये तो दरकार था यही तो चाहिए था हमें इसी को तो हम ढूंढ रहे थे so ABCD is a parallelogram so next class रे बाकी 8.6 थ्योरम रो आगु को प्रोग्रेस करवा 8.6 थ्योरम सहित आगु को देखिबा 8.6 रे तो डायगोनल्स कथा बाइसेक्ट केमती करंती डायगोनल्स जदी क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करले सिला गोटे पैरेललोग्राम तापर एग्जांपल अछि तीनटा चारटा नहीं पांचटा एग्जांपल्स तापर एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट वीडियो रे कवर करिया बाकी आउ गोटे वीडियो रे मिड पॉइंट थ्योरम सहित मिड पॉइंट थ्योरम माने 8.8 8.9 सारी की आउ दुटा एग्जांपल सारी की एक्सरसाइज सारिबा तने आउ दुटा वीडियो रे चैप्टर पूरा कंप्लीट हबो देखिबा ओके सी यू